Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 25th of February. The first news is National Strategy on Additive Manufacturing. This is also known as 3D printing. We'll see the detail of this as well, right? So this is basically the 3D printing. Now the other news, that is tea exports freed over Russia uncertainty, the crisis which is ongoing between Russia and Ukraine. So what is the impact that the tea sector is going to have? Third, Supreme Court says Tribunal Act goes against its order. Second last news, that is India called for immediate ceasefire and dialogue between the Russia and Ukraine crisis. The last is an editorial from Indian Express, insufficiency green. So we'll understand the detail of this editorial in the later part of this video. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about the prelims test series, those of you who will be appearing for the upcoming prelims examination, this is a chance that you can apply for 60 high quality tests, and practicing test is very important. For more details, you can refer to the description section of this video, जहाँ पे मैंने एक dedicated link दिए हैं to get more details about this course. Now let's get started about the news analysis. The first is National Strategy on Additive Manufacturing. This is also known as 3D printing, right? So this particular news is important for General Studies paper 2, that is Government Policies and Intervention for the development of various sectors and issues arising from its design and implementations. So recently, the Ministry of Electronics and Information Technology, इन्होंने एक press release की है where they have come up with a strategy called National Strategy on Additive Manufacturing, which is very important, that would provide a roadmap for the 3D technology in our country, right? Or 3D printing. So the ministry aims to increase India's share in the global additive manufacturing to 5% in the next 3 years. तो आने वाले 3 years के लिए टारगेट रखी गई है that 5% should be India's share in terms of the manufacturing of 3D printing. Now with this, India hope that it could likely to add almost 1 billion to the gross domestic products by this time, right? So the anticipations, the target is set for the $1 billion of the GDP. Now 3D printing uses computer aided designs to make prototype, जहाँ पे जो models होते हैं, work model create की जाती है of an object by laying down the successive layer and materials. So this is how it's actually function. I'll give you more detail about how the 3D printing is going to help in society and other domains. We'll see the detail of that as well. Now what is the aim of the policy which was recently launched by the government of India? तो जो national strategy लाई गई है additive manufacturing के लिए, this calls for the development of 3D printing till 2025, and it aims to achieve certain targets. Which are those targets? The first, that is 50 India specific technology for material, machines and software. Now the other target is 100 new startup for additive manufacturing और 500 new products बनाने की बात की गई है नए variants, नए technology के साथ. In total, the Ministry of Electronics and Information Technology, they are hoping that new startup and opportunity that would provide the jobs also, and it will also create 1 lakh new skilled worker for the next 3 years, right? So this vision is not a long-term vision. This is a upcoming 3-year visions के लिए plan की गई है, and it is expected ये एक ऐसी sector है जो boom करेगी और इसमें बहुत ज़्यादा technological upgradations भी देखे जाएंगे. Now, in national strategy, the Ministry of Electronics and Communications and Technology, they have come up that to get the additive manufacturing or 3D printing space, India must adopt it all sectors. जितने भी अहम sectors हैं, जहाँ भी 3D printing की utilizations हैं, उनकी domains हैं, वहाँ पे इनको use करना चाहिए, including the defense and public sector. So this is what was highlighted in the particular national policy.
And even the apex body, which has a subject matter expert or the leader from the global or local industries, could also be included into the lead mission. So this will help to get an idea, the expert opinion to execute this policy at national level as well as at the local level. ना 3D प्रिंटिंग होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है? 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, विच यूजेस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूज की जाती है, प्रोटोटाइप बनाई जाती है, वर्क मॉडल क्रिएट की जाती है, जो कि एक सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल, प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक्स, मेटल्स, फाइबर और सेरामिक को यूज करके की जाती है. Now it help the software and the model to be printed and first developed by the computers and then it give instruction to the 3D printers. उसके accordingly ही design जो भी आपने system में software में data feed किया होगा, that would be coming up as a byproduct. Now advantages क्या क्या है 3D printing के? First and foremost, 3D printing offer a significant advantages over the traditional fabrication because it does not require expensive tool that has to be used in the mining process. So cost cutting की अगर बात करें, so the product which is finally being manufactured, तो वहाँ पे जो कंज्यूमर है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच कॉस्ट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगी. इवन द कंज्यूमर कैन अवेल एट एज अ लेसर कॉस्ट. Another key advantages is the ability to produce very complex shapes of geometries that would otherwise not be possible by the construction or manual workers. तो 3D टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर में अपग्रेड की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, मैनुअली उसको हैंड से करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Moreover, it can lead to the less generation of waste. So these are some of the major advantages of the 3D printing or technology. Now, in which domain 3D is going to help? So these are the list of the domain. It can help in the automobiles, spare parts, crockery, furniture, shoes, toys, musical instruments होते हैं उसमें, foods and pro aesthetic device. So these are some of the major or you can say daily uses field where 3D technology is going to be a game changer. Now the other news, Teaexporter fleet over Russia uncertainty. जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है उसको लेकर के जो इंडिया के टी एक्सपोर्टर्स हैं, they have raised concern that what is the future for the sectors and how the next 2 or 3 months is going to be, और या उसके अलावे जो लंबे टाइम भी होंगे वो कैसे होंगे. This particular news is important for General Studies paper 2, effect of policies and politics for developed and developing countries on India's interest and India's diaspora. So definitely Indian tea industry is facing the uncertainty after the war that has broke between the Russia and Ukraine recently. तो जो यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट ने कंसर्न रेस की है रिगार्डिंग द मार्केट दैट वाज एक्सेसिबल टू इंडिया, दैट इज द रशियन मार्केट, और यूक्रेन की मार्केट भी वो एक्सेस कर पा रहे थे. सो around 145 million kg of tea that is being imported to Russia and 40 million kg is imported, basically is given to the Russia people, right? And close to 45% of the share come from the South India. So South India, मुन्नार जैसे जगह से काफ़ी ज़्यादा जो टी है वो एक्सपोर्ट की जाती थी रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्रीज में. Now India ships around 50 million kg to Ukraine as well. So you can see 145 million kg annually इंडिया प्रोड्यूस करती है जिसमें 40 मिलियन केजी जो है वो रशिया को देती है, उसके अलावा 15 मिलियन केजी दे गिविंग टू यूक्रेन. सो इन टोटल this is almost 55 million kg of tea that is being exported to Ukraine and Russian countries. Now around 18% of India's tea shipment go to Russia. जितनी total production है इंडिया की उसकी 18% जो है वो रशिया जाती है. So you can see the significance and the people dependence on this economy. Now decline हुई है टी एक्सपोर्ट में. This is not about this crisis which is ongoing. ये ट्रेंड देखी गई है कि पिछले कुछ सालों से डिक्लाइनिंग ट्रेंड है. The tea export has shown a decline in 2021 as against 189 million tea which was exported. 2021 में ये रिपोर्ट की गई है only 175 million kgs. Now Ukraine is a major importer of Indian tea, right? Apart from Russia, Ukraine भी काफ़ी अपने countries के लिए वहाँ import करती है. And if the tea export of the two countries are affected, it will definitely have a impact on Indian tea sector, the people associated with it, and also the livelihood that is dependent with the concerned people.
So the Russian market of the Indian is extremely important. जहाँ पे पेमेंट की इश्यूज भी अगर बात करें, shipment to Iran and other vital tea export is a major destination. So let's see how the things is coming to normal, because many countries, even India, advocated for a diplomatic solutions to the problem that is arising amid the Ukraine and Russia crisis. Now you can see the tea companies' share have fell drastically, and India's tea export to Russia during January and November 2021 was only 30.8 million kg, and India's tea export to Ukraine was 1.6. This is the value or the correct number, and the total India's total export was during 175 million kgs. So these are the value which is on the declining side. So moving to the other news of the day, that is Supreme Court says Tribunal Act goes against its order. This particular news is important for General Studies paper 2. That is structure, organization, function of executive and judiciary. So let's understand this news. The Supreme Court has made some remark regarding the central government intentions to move and introduce a regulation last year that scrapped many key tribunal. The total number of tribunal that was scrapped was 9. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आइडेंटिकल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, उसके बावजूद एक ऐसी लॉ पास की गई है. दिस इज समथिंग व्हिच इज अ डिसऑनर टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन अ प्ली दैट वाज फाइल्ड बिफोर इट. सो इन एन ओरल रिमार्क इट हैज मेंशन्ड दैट सीजीआई ने ये कहा था कि जो ये पास की गई है बिल दैट वाज नेम्ड एज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, दिस इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. और इस प्ली को मद्रास हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन ने और राज्यसभा के जो मेंबर है जयराम रमेश ने प्ली फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में. Now, what was the concern that was raised over the Tribunal Reform Act 2021? And this is specifically important for your mains examination because it can be asked how the Tribunal Reform Act is impediment in terms of judicial independence and the functioning of judiciary. तो इस एक्ट के थ्रू ये कंसर्न रेज की गई है कि ये 9 जो ट्राइब्यूनल को अबॉलिश की गई है इसमें, दिस इज अ सीरियस थ्रेट टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और गवर्नमेंट को एक वाइड पावर देती है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस, सैलरीज एंड की मेंबर दैट हैज टू बी अपॉइंटेड इन अ ट्राइब्यूनल. ऑल ट्राइब्यूनल आर अ क्वासी जुडिशियल बॉडी विच फंक्शन इंडिपेंडेंटली, और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए ये बिल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्ट्रक डाउन किया है, डिस्पाइट द फैक्ट द गवर्नमेंट हैज अगेन पास्ड दिस बिल, राइट. सो द लॉ वाज पास्ड विदाउट अ डिबेट इन द पार्लियामेंट. दिस इज अगेन अ कंसर्न दैट वाज रेज्ड. नाउ पिटिशंस में ये आर्ग्यू की गई है कि जो एक्ट पास हुई है लोकसभा में, दैट वाज जस्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के ऑर्डर को स्ट्रक डाउन करने के लिए कहा था, उसके बाद ये आई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था ट्राइब्यूनल रिफॉर्म, दैट इज रैशनलाइजेशन कंडीशन एंड सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021. बट देन ऑल्सो द एक्ट वाज ब्राउट वेरी ऑन द सेम प्रोविजंस, और ऑर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थी वो कंप्लीट वायलेशंस थी इस रूल की, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसको गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए था और दोबारा से इस तरह के सेम रूल्स वाले लॉस नहीं लाने थे. So 8 tribunals were dissolved in this bill. The list of this include the Cinematography Act 1952, Trademark Act 1999, Copyright Act 1957, Custom Act 1962, Patent Act 1970, Airport Authority of India Act, right? The Control of National Highway Land Traffic, and basically the Geographical Indications Goods and Services Act, right? तो ये फिल्म सर्टिफिकेशन ट्राइब्यूनल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोर्ड है, अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, सर्विस एक्सरसाइज और कस्टम्स के जो बोर्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड, एयरपोर्ट एपलेट बोर्ड, नेशनल हाईवे ट्राइब्यूनल बोर्ड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड. So these were some of the important tribunal that was recently abolished by the law that was passed by the parliament. कुछ अपॉइंटमेंट पेंडिंग्स हैं, स्टिल अपॉइंटमेंट आर येट टू बी मेड फॉर द ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल है. उसके अलावा जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनके फाइल्स अभी भी पेंडिंग है. एंड अ सिलेक्शन कमिटी हैज़ टू बी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू मेक द अपॉइंटमेंट. बट अ controversy has arisen amid the bill that was recently passed by the parliament creates a controversy, and Supreme Court would definitely take a note in this regard. Now, the other news, that is India called for immediate ceasefire and dialogue. This is again something very important that we have seen the crisis
that has just started in the Ukraine, right? So we'll see and understand this news also. This is important for General Studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपील किया है फॉर द इमीडिएट सीज फायर रिटर्न, और एक डायलॉग पे बाने की बात की है, जो सीज फायर उसको खत्म करने की बात की है. एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ डायलॉग इन कन्वर्सेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. तो ये इंपॉर्टेंट बातें कही है. रशिया ने अपने स्टैंड क्लियर किया, ऑल्दो India is supporting Russia because we have a huge military dependence to Russia, right? So PMO has said that a safe exit of Indian citizen is again something which is the high priority for the government of India. And the Prime Minister has reiterated, उन्होंने दोहराया है that long-standing conviction to the differences between Russia and NATO group cannot be resolved through honest and sincere dialogue. तो जो दोनों नाटो के और रशिया के बीच में जो टेंशंस एक्सकेलेट हुई हैं, बेसिकली दैट इज द यूक्रेन, बट द हिडन एजेंडा वाज समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल इज अ ग्लोबल कंसर्न. और ये डायलेमा जो है रशिया ने क्रिएट की है आफ्टर दे हैव इन्वेडेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन, राइट? सो लेट्स सी a map that will help you understand. There are some images and map work that will help you to get a better clarity about this news. तो बात करें, ये मैप आप देख सकते हो. दिस इज रशिया, द इमीडिएट नेबर इज यूक्रेन, राइट? So the Ukraine is the Eastern Europe and shared border with Russia, and it used to be the part of Soviet Union but become independent in 1991. So Ukraine was a part of Russia. Now, moving ahead, you can see in this particular map where Russia and Ukraine, the blue in color says that joined NATO before 1997, and these are the country which has joined NATO forces or NATO alliances in 1997, right? So these are the before one, and this is since 1997. So Ukraine also wanted to be the part of NATO because जो immediate neighbors है वो NATO के साथ हैं, तो यूक्रेन भी चाहती थी कि हम भी NATO के साथ मिल के जाएं. So it also shared the borders with other countries that are the members of NATO, a defense military alliance formed after the World War II. But Russia has defended that Russia don't want Ukraine to be the part of NATO alliances because Russia को फिर बाद में काउंटर करने के लिए NATO एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि एक बैरियर हो सकती है रशिया के लिए. So we don't know what is the hidden interest of Russian president, but this is what expected to be the reason, right? Now the other map you can see the Crimea. Basically, जो President Putin है, they have seen the Ukraine as a historical part of Russia in 2014, and Russia invaded Crimea in the southern Ukraine and continues to occupy it, right? Now what after that, right? So since 2014 Russia backed separatists, जो Russia backed separatist हैं वो कुछ important areas में रहते हैं, that is in the eastern Ukraine. ये eastern Ukraine के region है जिसमें जो लुहांस्क है और डोनेट्स हैं, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रशिया सेपरेटिस्ट अभी भी रहते हैं और ये चाहते हैं कि ये रीजन रशिया में वापस से मिल जाए. So this is what the people of this particular region demanded. Now what has recently happened, you can see this blue in color is the Russia-backed separatist area. Now in February 24, that is way back, yesterday only, the President Putin has authorized an air strike और यूक्रेन ने ऑर्डर किया कि ये जो कंट्री है ये दोनों जो जगह रिपब्लिक को अब रशिया इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करती है, राइट? सो दैट टू इंक्लूड लुहांस्क एंड डोनेट्स्क. तो President Putin has recognized the two regions held by the Russia-backed separatists as an independent state and ordered the Russian troops to tear and have a peace deal. So this is how Russia has occupied this region and possibly this is going to be merging with Russia, right? एक separate अभी के लिए फिलहाल एक separate country recognize की गई है, separate republic recognize की गई है, but very soon this will be the part, and this area was mostly dominated by the Russia-backed separatist. Now evacuations of Indian is again very important. Cabinet Committee on Security की meeting हुई कल Prime Minister के chairmanship में, and they said that the topmost priority for the government is to evacuate the people, the students who are actually stranded in the Ukraine or other regions, right? ऐसे बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है लाइक ट्वेर, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में. यूक्रेन में भी काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं. सो देयर इवैक्यूएशन इज़ अ बिग मोस्ट कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ना वॉर जो हुई है इसके क्या क्या रिपरकशन होंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म.
So first would be the crude oil price, that is expensive, although India में prices 100 के ऊपर रही हैं, but because of election government has regulated it, but अब इसके बाद और ये ज़्यादा बढ़ेगी. The commodity, जो commodity experts है वो believe कर रहे हैं, जो Brent crude है, मैंने आपको Brent और WTI दोनों के बारे में बताया था क्या difference है. If you have not watched that video, do check it out. So it is said that it is going to increase by 105 barrel, $105 a barrel, which was earlier only 65. It gradually reach up to 90, and present it is 105, right? Due to this, जो crude oil है वो एक expensive होगी, and even the price is expected to rise in our country also. Rise in inflation, if the price of commodity, or you can say जो freight है या फिर ऐसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेगी, तो उसके असर जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑयल्स, ये सारी चीज एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस. इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, डेफिनेटली ये जो एक्सक्लेशन हुई हैं इसके वजह से जो हमारी स्पेंडिंग होगी क्रूड ऑयल के लिए, फॉरेक्स रिजर्व का ज़्यादा खर्चा होगा. दैट इज द रीजन इट कैन इवन इम्पैक्ट आर एक्सचेंज रेट. सो दीज आर सम ऑफ द लॉन्ग टर्म and immediate measures that we can have amid the war. Now the other news, this is an editorial, insufficiently green. This is important for general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it, design and implementations. So what we are going to discuss in this editorial, under this editorial I'll just make you understand via 4 important subheads, that is the budget standpoints, direct allocations for the environment sectors, allocation for the environment and non-environment sectors, and allocation for the sector with the environmental impact. And the entire editorial focuses upon the union budget and it focuses upon the climate. So let's understand this editorial in detail. यूनियन बजट 2022-2023 में ये बात ही कही गई है एडिटर के द्वारा that it has not put emphasis on the relationship between the economy and ecology, right? So these are the 2 points where he focuses emphasis upon this editorial. But the budget has stayed focused on climate action. Why? Because of the COP26 and India's commitment to net zero emissions by 2070. So there's a massive rise in the allocations in infrastructure project, जो कि एक ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी देती है और कॉन्ट्राडिक्ट करती है गवर्नमेंट की अप्रोच को टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक तरफ ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, फिर वापस से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है वो कैसे पूरी की जाएगी. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न दैट हैज बीन रेज्ड इन दिस एडिटोरियल. सो बजट स्टैंड पॉइंट में कुछ 3 इंपॉर्टेंट सब कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट एलोकेशन फॉर द एनवायरमेंट सेक्टर, allocations for the environment and non-environment, and allocations for the sector with the environmental impact. So we'll see each and every sector one by one. So first, direct allocations for all environment sectors. यहाँ पे slightly increase देखी गई है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के budget allocations में, which has increased to 3030 crore from the earlier one, that is 2870, right? But this is something which would be easily wiped out due to inflations. और अगर बात करें सेक्टर्स लाइक फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, दे हैव सीन अ हेल्दी राइज इन एलोकेशन, राइट? जहाँ पे आउटले रखी गई है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, उसके लिए भी जो बजट है वो इंस्टेंटली डिक्लाइन हुई है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. नाउ एलोकेशंस की अगर बात करें फॉर इन्वायरमेंट एंड नॉन इन्वायरमेंट सेक्टर, सो बजट फोकसेस अपॉन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? जो कि एब्डिंग करती है मिलेट्स को भी इवन. But there are no details on the allocations in terms of linkages, जैसे कि farming variables हैं, manures हैं, इसके जो markets हैं, how this is accessible and reachable to the farmers as well. There's no connection in this budget that was established. Also, the measure push of the food processing of this budget. Basically, अगर बात करें क्या क्या measure push होनी चाहिए food processing पे, that was also not categorically stated in the union budget. And climate front पे अगर बात करें, several positive provisions, the use of biomass, power stations, बूस्ट टू बैटरीज, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, कमर्शियल बिल्डिंग, ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी बहुत हद तक डिटेल्ड मेंशन नहीं की गई है. नाउ इट इज इनकरेजिंग कि एक पैराडाइम शिफ्ट देखी गई है सस्टेनेबल अर्बन लिविंग की तरफ, जहाँ पे ये प्रॉमिस की गई है दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज समथिंग विच इज डिमांडेड for the citizen would be promoted, but the budget does not make a promise for this, right? So what need to be focuses upon is to promoting more in public transport so that people can use less of their own vehicle and pollution level can drastically reduced.
अनफॉर्चुनेटली एलोकेशंस यहाँ पे भी कम है, सिर्फ मेट्रोज में की गई है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है. Now, even it can boost the electric vehicle, likely to be the benefit for the rich unless prominently focused for the budget. अगर हमें e-vehicles लानी है, electronic vehicles, तो that should be buses, not the cars that is to be personally used, because it would be very effective. कुछ ऐसे cars brand है like Tesla जो कि unaffordable होगी कुछ लोगों के लिए भी. तो गवर्नमेंट बसेस लेकर के आए, जिस तरह से दिल्ली में DTC की जो बस है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, they have started with the electronic vehicles bus. So यहाँ पे पब्लिक यूज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की जरूरत है. नाउ एलोकेशंस टू द अदर सेक्टर विद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रीडोमिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बजट अनाउंस किया इस बार, एंड इन्वेस्टमेंट इज देयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. स्मॉल टाउन विलेजेस need to also be focuses upon, where it has proposed a major project, and the proposed of 25,000 increase in the highway has further fragmented the forest, wetland, mountain, grassland, agriculture land, और जो बहुत सारे जो villages हैं उनको भी bypass करेगी. So whether this would be a healthy, अगर बात करें जिस तरह से construction works हो रही है वो कहीं ना कहीं environment को भी impact करेंगे. We have seen a lot more basically the things taking place in terms of infrastructure development. यहाँ पे अरे जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा controversy हुई. Even some of the region in Kerala was again a controversial one. So we have to see the environmental impact of the construction which is taking place. Now specific budget allocations की अगर बात करें, that is a concern. केन बेतवा रिवर जहाँ पे almost 40,000 करोड़ रुपीस allocate की गई है, it is assumed that it will definitely impact the tiger habitat. Right? Or Deep Ocean Mission and Blue Revolution allocations are oriented towards commercial exploitations and conservation and sustainable use of this. So recent announcement of the palm plantations जो proposed की गई है नॉर्थ ईस्टर्न अंडमान, ये एक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल होगी और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी वरीसम हो सकते हैं. Right? And finally the budget misses out of the shift in the green job. So there's no talk about the green job being commitment to the Paris climate change. और आने वाले समय में जितनी भी कोप्स की मीटिंग होगी टारगेट सेट की जाएगी, बट इट इज़ इंटेंटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू सेट अ रोड मैप, अ इंस्टिंक्ट, अ इंटेंशन दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रीन and clean economy. Now moving ahead with the MCQ questions of the day, before I proceed, just to tell you the answer of yesterday's question. For first question, the correct option is C. For second question, also the correct option is C. Today's MCQ, consider the statement with regards to new umbrella entities for retail payment. Only those entities who are owned and controlled by Indian citizen at least 3 years for experience a segment to the part of NUE. No foreign investment is allowed in the NUE in existing guideline. This is what the statement has to say. You have to look for the correct option. So this is something which you have to practice. Second, electoral bond, election is ongoing. तो ये questions important हो सकते हैं. All nationalized banks are authorized to issue in cash bond for the valid 15 days for the date of issuance, and these bonds are remittable and designated account of the registered political parties. So do check it out. Which among the following is the correct option? This is the homework that you can have. This was all about the daily news and editorial analysis for a day. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.